गाइस आपको एक वायरल रील दिखाता हूँ जो बहुत वायरल हुई पड़ी है आजकल, 2 दिन पहले आई है। और इसमें एक इंडियन लड़की एयरप्लेन से बाहर निकाली जा चुकी है बिकॉज वो लाउड म्यूज़िक सुन रही थी अपने फ़ोन पे, लाउड वॉल्यूम पे। फ़ोन पे उसने कुछ चला रखा था जिसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ थी और आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। उसकी रियलिटी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि उस लड़की के हिसाब से उसने सिर्फ 30 सेकंड के लिए कुछ सुना स्पीकर पे। बट क्या 30 सेकंड पे स्पीकर पे सुनना लाइक इतनी बिग डील थी क्या कि लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर दी और पुलिस आ गई और उसको प्लेन से बाहर निकाला गया? आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है इसकी आज। I paid money for it and I played a video for 30 seconds at 50% sound. And that's the fucking reason you're picking me off? No fucking. Hey, if you want to record, totally fine. No. Okay. I'm calm. No. No, I'm not. No, I'm not. Because I said that sounds like a you problem, your staff had a lot fucking bullshit. That like they didn't accept that, and that sounds like a damn problem. Go ahead and call the police. What the actual fuck? I stopped after that. I stopped after the second warning. It's okay for me. तो ये लड़की अमेरिकन एयरलाइंस में बैठी हुई थी प्लेन में और बहुत तेज लाउड म्यूज़िक पे गाना पता नहीं गाना सुन रही थी, क्या सुन रही थी, कुछ तो था, स्पीकर पे सुन रही थी। उसको वार्निंग दी 1-2 बारी पर ये रुकी नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर पुलिस कॉल कर दी गई और पुलिस ने इसको प्लेन से बाहर निकाल दिया। कंटिन्यू करते हैं, पर आपको रियलिटी बताऊंगा बाद में कि क्या इतनी बड़ी बिग डील थी क्या कि इसको प्लेन से निकाल दिया स्पीकर पे सुनना। For me to play a 30-second video, yes, please record me. Listen, hey, is this not a free speech America, or like are we being to literally everybody? I know. I am keeping the peace. Can I not express my feelings? Can I not express my feelings? Okay, thank you. I am doing this. Okay, thank you for recording me. I played a video for 30 seconds. Come on. Go ahead. You gotta go in front. Thank you. Okay. 30 seconds. Thank you, officer. तो ये थी सारी क्लिप गाइस। मैं मानता हूँ इसने स्पीकर पे सुना और इसको वार्निंग मिली, पर इसको जो निकाला गया ना, इसका रीज़न पता है, बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये है कि अमेरिका में एक नया रूल अब आया है फ़्लाइट्स के अंदर, स्पेशली यूनाइटेड एयरलाइंस में। 1 हफ़्ता पहले आया बाय द वे। उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि आप लोग अपना स्पीकर पे कुछ नहीं सुनेंगे, कोई भी आईपैड हो, फ़ोन हो, कुछ भी नहीं सुनेंगे आप लोग। आपको हेडफोन्स, ईयरबड्स यूज़ करने पड़ेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्लेन से निकाला जा सकता है। और अगर आप भूल गए हो तो आपको हम प्रोवाइड भी करेंगे, बट आपको यूज़ करने पड़ेंगे वो अपना हेडफोन्स एंड ऑल। इस बंदी ने कंप्लाई नहीं किया उससे। रीज़न यही था, इसने स्पीकर पे सुना पर इसने कंप्लाई नहीं किया। इसको हेडफोन्स वगैरह यूज़ करने चाहिए थे जो प्लेन दे रहा है, या अपने खुद के पर्सनल। इसने वो कंप्लाई नहीं किया, इसलिए इसको बाहर निकाला गया प्लेन से। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़। We've all been there, forced to listen to other people's phone conversations, music, or social media videos on their speakers. Well, now United Airlines wants to put a stop to this. Passengers who don't use headphones could be kicked off the flight and banned permanently from flying United. If you forget to pack your headphones, don't worry, United does offer free earbuds on flights. United Airlines formally adding, that's right, there they are, a new rule to its contract of carriage, a legally binding agreement that is between the airline and its passengers, specifically requiring the use of headphones when listening to audio or video content on your personal electronic devices. So you must keep it in your ears. This should be on every flight, I think, but there is only one person who can tell us what is the right way to go about this, and it's Mr. Manners, who joins us. Hello there, Thomas. How are you? Hi, Richard. Good to see you. But in this case, United, at least, is cracking down and saying, you know what, I think we're going to curb the noise from these electronic devices. So tell me how you feel about this. Sure. So this has long been an unofficial policy for all of the airlines that they encourage you when you're listening to your own entertainment to make sure that you're doing so with either wired headphones or Bluetooth earbuds.
It's United now who's taking the lead and making this a little bit more serious. So they've effectively put some teeth into a policy that was a common courtesy policy. Now the flight attendants, if necessary, if a passenger refuses or a passenger pushes back, they now have the ability to say, if you're not willing to do this, we may need to ask you to depart the plane. And not only that, but any costs the airline incurs as a result of a delay that you caused by your refusal, the airline can go after you for that money. So it's not just about getting kicked off the flight. There could be potentially massive monetary damages involved as well. तो ना आपने गाइस, तो ये एक नया रूल है जो अभी रिसेंटली आया है. यूनाइटेड एयरलाइंस में तो आ चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, बाकी एयरलाइंस भी इसको कर रही हैं. ये अमेरिकन एयरलाइन में थी और वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है. इसको ऑफर किया गया था, वार्निंग दी गई थी कि तू अपने स्पीकर मत यूज़ कर, चाहे जितनी मर्जी वॉल्यूम हो, तेरे 50% हो, जितनी मर्जी है, स्पीकर मत यूज़ कर. स्टिल बॉदरिंग अदर पीपल. एंड कॉमन कर्टेसी भी होती है गाइस. वी शुड बी माइंडफुल ऑफ अदर पीपल अराउंड अस. तो ये बंदी नहीं रुकी, ये फिर भी चलाती गई. इसको ऑफ़र किए गए थे हेडफोन्स, नहीं लिए इसने. रूल तो रूल है, सबके लिए एप्लीकेबल है. इसको फिर निकाला गया प्लेन से. ये थी रियलिटी. लो, अगर कोई सोच रहा है ना कि 30 सेकंड के क्लिप के लिए, 30 सेकंड की वीडियो के लिए, किसी चीज़ के लिए इसको निकाल दिया गया, नहीं. 30 सेकंड के इसने चलाया होगा, इसको वार्निंग दी गई, इसने यूज़ नहीं किया, ये नहीं रुकी, इसलिए इसको निकाला गया है. और सुना आपने आगे क्या बोला इस बंदे ने, कि अगर प्लेन डिले हुआ है और उसको मॉनेटरी लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी इस बंदी से ली जा सकती है. आगे सुनते हैं. Now, most airlines, with the exception of a very few, have eliminated seatback video screens entirely to save money, to save weight, and put the onus on the passengers to use their own devices, be it a tablet, be it a laptop, or a phone. And with that, the airlines have ceded a lot of the control over the volume. Not addressed by this policy is also inappropriate content that someone in the middle seat next to you may be watching. This is, of course, an entirely other issue. The airlines don't have control over what's on your screen. But certainly, I completely agree. Common sense should rule the day here. If the person next to you can hear it, if the person you're in the middle seat, the people on either side of you can hear it, this is disruptive. Maybe you want to sleep. Maybe you want to read. Maybe you're watching your own entertainment and it's so loud coming from someone's speakers that you can't rightly watch your own movie or your own content, even with headphones in. It would make me gleeful beyond belief if we could do something similar on the MTA. I feel like the subway is where we really see this as an issue. This is whether it's people on a FaceTime call or people doing videos very, very loud, or even just loud music. They seem to be completely ignorant of the fact that everyone around them can hear. And whether it's a private conversation or a movie or just music they like that they want to crank up for the whole subway car to hear, I think, what's frightening, and this is the next thing to come, is with Starlink connectivity in the air on all these airplanes, the next thing to come is phone calls in the air. So if you think it's bad hearing somebody's speaker content, that may go away, but the next thing you may hear is not necessarily the two ways of the phone call if somebody's wearing headphones, but in fact, you may be hearing someone speaking on the phone in flight, which I rue the day when that happens. I think, flying can be very uncomfortable, and this is going to make it far less enjoyable for everyone. इस बंदे ने 2 चीज़ें और बोली कि ये फीचर, ये जो पॉलिसी है, ये सबवे में, मेट्रो में भी आना चाहिए, क्योंकि शेड स्पेस है. अगर प्लेन में भी शेड है तो सबवे में भी शेड है. वहाँ पे भी अगर आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप सबवे में भी डिस्टर्ब कर रहे हो, मेट्रो में भी डिस्टर्ब कर रहे हो. तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमें सब जगह ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का, कंसिडरेट होना चाहिए हमें एक दूसरे के लिए. पर जो दूसरी चीज़ इसने बोली ना, वो थी कि फ्यूचर में हो सकता है कॉन्वर्सेशन लाइक कॉलिंग वॉलिंग भी आ जाए प्लेन्स के अंदर. दैट विल बी स्कैरी, क्योंकि आजकल प्लेन्स, देखो, सुपर स्पीड इंटरनेट तो होता ही है आजकल प्लेन्स में, राइट. स्टारलिंक वगैरह अब आ रहा है, और उसके बाद अगर इन्होंने अलाउ कर दी ना कॉलिंग वगैरह, मैस हो जाएगा बहुत. इट विल बी मैसी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी कॉन्वर्सेशन कोई अब आजू बाजू वाला सुने. 3 लोगों की सीट होती है, मेरे आजू बाजू कोई बैठा है, मेरी कॉन्वर्सेशन सुन नहीं लेगा आजू बाजू वाला, या मैं उनकी नहीं सुनना चाहता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आराम करना है, मैं नहीं सुनना चाहता उनकी. तो कॉलिंग तो नहीं आनी चाहिए डेफिनेटली. यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा, रिमाइंड कराऊंगा आपको, अगर आप हमारे चैनल एंजॉय करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं. बहुत लोग आते हैं, देखते चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना.
We were just talking about United Airlines doing away, saying you cannot listen to your media without having some earphones, Thank you, right? because I get tired of hearing people play Candy Crush, Anita Blanton. I don't, why am I listening to all that on Sky High? That is so funny because the minute I heard about this, I was like, this seems like something that Terrence Lee would have championed. All right, let's talk about it. We actually have more of an expert than the three of us. Jacqueline Whitmore is a nationally known etiquette expert, a former flight attendant. So let's go ahead and bring her into the discussion. Thank you so much for being here. My pleasure. What was your reaction to this move? It's about time. It is about time. I think that we need to pack our manners whenever we go on an airplane, whenever we travel. And the violators of this, ironically, are parents who don't put earbuds in their children's ear or headsets. So I see it all the time when I fly. Interesting story. Travelers may now be banned from United Airlines if they don't wear headphones. Now, United Airlines, the first to make this rule, which says the airline can refuse transport to any passenger who fails to use headphones while listening to audio or video on its planes. Passengers who don't follow the rule could be removed from their flight and permanently banned from United Airlines. Now, United says the rule should not be hard to follow because they do offer free wired headphones. Every flight, all the time. You just said, yeah, they do. Most of them do. They do offer something. And that is the whole story, guys. अगर कोई बोल रहा है ना ये बंदी plane से क्यों निकाल गई, ये थी story. Obviously, we should have civic sense. We should have common sense. We should be a little mindful of our surrounding, considerate of other people around us. ना कि बस स्पीकर पे यूज़ करने लग जाओ. And this is for everyone, not only for Indians. मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ. मेरी ऑडियंस सारी इंडिया से है. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग अच्छा बिहेव करें पब्लिक में. और देखो मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूँ. 7575 9090 9090 6161 6161 8383 8383. ये वाली क्लिप भी बहुत रिसेंट की क्लिप है, प्रॉब्ली लाइक 2 हफ्ते पुरानी क्लिप है. इसमें एक बंदी अपनी फैमिली के साथ एयरप्लेन में तंबोला खेल रही है. तंबोला, हाउजी, ये जो भी हम बिंगो जो भी बोलते हैं इसको. सीरियसली चिल्ला के, वेयर आर द सिविक सेंस? सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एजुकेट, टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि हम लोग ये गलती ना करें. इट अफेक्ट्स अस. और जो वो बंदी भी चिल्ला रही थी ना, जो पुलिस वालों को गालियाँ दे रही थी, एयर होस्टेस को गालियाँ दे रही थी, वो जब वो बाहर जा रही थी प्लेन से, वो कह रही थी ना, हाउ इज़ माई प्रॉब्लम? इट्स योर प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव बीन बैंड फ्रॉम अमेरिकन एयरलाइंस. तुम्हें प्लेन से धक्का मार के बाहर निकाला जा चुका है, अब तुम बैंड भी हो फ्लाई करने से अमेरिकन एयरलाइंस. तो इट्स योर प्रॉब्लम. सो डोंट फेस दैट प्रॉब्लम गाइज. थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे हम दूसरों का, थोड़ा सा माइंडफुल होंगे अपनी सराउंडिंग्स का, अपने थोड़ा कंसिडरेट होंगे. अगर हम दूसरे लोगों का बहुत अच्छे से रहेंगे, आप लोग, आपको सब लोग प्यार करेंगे, अच्छी निगाहों से देखेंगे आप लोग. यदि आज की वीडियो गाइज अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में. बाय.